माननीय राज्यपाल मेघालय श्री फागू चौहान जी, माननीय मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष श्री थॉमस ए संगमा जी, माननीय उपाध्यक्ष श्री शिराजी मेघालय के विधानसभा और जितने भी हमारे पूर्वोत्तर राज्य के पीठासीन अधिकारी, माननीय डिप्टी स्पीकर्स, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और जितने भी यहाँ पे अध्यक्ष मेघालय असेंबली के और पूर्वोत्तर राज्यों से आए, आज हमारे यहाँ जो 20वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 3 की वैलिडिक्टरी फंक्शन में आज हमारे बीच माननीय राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है, उसके लिए मैं हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत हमारे तरफ से थैंक्स देना चाहूँगा। माननीय राज्यपाल की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा ये जो 20th एनुअल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आज जो शिलोंग में हो रहा है, इसमें हमारे सारे पूर्वोत्तर राज्यों के जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं और जितने भी हमारे विधायक और मंत्रीगण यहाँ शामिल होकर 2 विषयों पे यहाँ पे चर्चा जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से ताल्लुक़ रखता है, जो गंभीर जो समस्या है उन पे 2 दिन चर्चा किए हैं हम लोग। And these 2 topics which we have discussed in these 2 days of our plenary session for this 20th conference of the CPA Region India Zone 3 was about the disaster management with respect to the northeastern stage and the way forward. And the other one was the regional connectivity to bring the northeastern state at par with the mainland India. ये 2 विषयों पे चर्चा 2 दिन में सारे जितने भी हमारे जितने डेलीगेट्स हैं, मेंबर्स हैं, दे हैव गिवन अ वेरी गुड सजेशन। उनके सारा 2 दिन में जो जो यहाँ पे लोगों ने अपना अपना सुझाव रखा है, उस पे बहुत सारा सुझाव आया है। उस पे अगर पूरा पे हमने चर्चा करेंगे तो बहुत ही लंबा और विस्तार हो जाएगा, इसलिए मैं 3-4 विषयों पे बताना चाहूँगा जो जहाँ पे सारे लोगों का सहमति था। When it comes to the regional connectivity, यहाँ पे लोगों ने जब रोड कनेक्टिविटी की बात किया है तो every one of us were of the consensus that the road connectivity for the northeastern state is very vital for the overall development of the northeastern region. And we are connected through the Chicken Neck, the Siliguri corridor. And there is a very precarious the road which connects to the entire northeastern state. So we need an alternate connectivity and strengthen the other source of regional connectivity, other than the Siliguri corridor. That was one of the major issues which everyone has raised. And the second issue was regarding the maintenance of the roads and other infrastructure which is built. Most of the time, what happens, we build the road, but we don't keep enough funds, no dedicated funds for the maintenance of the roads. So the whole purpose of giving connectivity to the places gets defeated if you don't have a proper maintenance for the roads and any other infrastructure for that matter. And और दूसरी बात जो कनेक्टिविटी में हमारा यहाँ पे बहुत सारे विषय पे हुआ है, रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ रेलवे कनेक्टिविटी, इसके बाद हमारा जो एयरवेज़ है, एयरवेज़ कनेक्टिविटी पे हुआ है, देन पावर कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कशंस हुआ है, और यहाँ पे खास करके इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कशंस हुआ है। तो लोगों ने
एक ही voice में they have appreciated the initiative of Government of India for giving special focus to the northeastern state when it comes to the overall development of the northeast region, because Honorable Prime Minister has always been vocal about developing northeastern state. He had even said that if the northeastern state doesn't develop, then the rest of the country will not develop. This is the kind of focus and the commitment towards the northeastern state of our Prime Minister Sri Narendra Modi, and we are very thankful that over the time now we have seen that there's a sea of changes when it comes to the infrastructure development and connectivity, when we talk about the road, railway, and almost all the northeastern states has got airports, the railway connectivities, and the road connectivities are improving from the 4 lanes to the double lanes to the remotest corner of the country. But we need more emphasis to keep the road all weather, and it has to be in a very sustainable way. The kind of technology we use for the northeastern state has to be thoroughly studied so that we have a sustainable infrastructure development in times to come. और उसके बाद सर हमारे यहाँ पे हमने दूसरा जो टॉपिक है जिस पे डिस्कशन हमारा चला था ये नेचुरल डिज़ास्टर पे. So when it comes to the natural disaster, we all are aware that entire northeastern state is prone to floods and the landslides. When the monsoon comes, and we know the monsoon in the northeastern state is almost 365 days in a year. Even the winter also we get a lot of rain, unprecedented rain during the winter. And the flood situation in the northeastern state, we all know that has been creating havoc and that has been creating menace, and it has been a big disaster for the entire northeastern state. But not enough attention has been given to the loss of the property and the lives due to the flood and other natural disasters here in northeastern state. And one of the members has rightly said it has to be declared a national disaster when it comes to the northeastern flood and the landslide comes. इसके बाद जो हमारे यहाँ पे लोगों ने जब when we discussed about the natural disaster, they were of the opinion that we all need to be we need to sensitize our people about the about the climate change and how we as a people, how we as a human being are contributing to the natural disaster. We human being, as a human, we are like greedy. We want everything. But when we want everything, we need to understand that because of our want, are we actually heading for a disaster? So that sustainable approach has to be, taken care. When we do a construction, we are very rampant. We don't realize that when we do a construction, that is going to, affect our soil stability, or it's going to clog the drains, or it's going to clog the streams, or it's going to, clog the lakes, and the lakes going to swell up and then create a flood kind of situation. So, इस पे लोगों का यही मत है कि there has to be a proper study about the northeastern region, about the flood, about the landslides, about the soil conditions, so that a permanent solution for the prevention is taken care, ताकि हमारे यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों में ये जो आपत आता रहता है, जो नेचुरल डिजास्टर है, उसको हम लोग कैसे कंटेन करें. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू टेल ऑनरेबल गवर्नर दैट ऑल द मेंबर्स, जितने भी हमारे यहाँ पे मेंबर्स पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल सजेशंस दिया है. तो इस सजेशंस को हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके तो इसको हम हमारे CPA हेडक्वार्टर लंदन में भी भेजेंगे. इसके बाद हमारा CPA इंडिया रीजन के ऑफिस में भी भेजेंगे. एंड ऑल द कंसर्न मिनिस्ट्रीज we will be sending the copy of the discussions and which we have taken here in this conference, so that the people at the center, at the helm of affair who makes policy, they understand what is the actual problem we face here in the northeastern state, and they incorporate all these issues in while they frame the policy there in Delhi, so that
the policies and the programs which are made for the Northeast is, tailor-made for the Northeast, so that when you frame a policy, it has to, be implemented in the Northeast in toto, so that there is no failure of the program, and when the people benefit out of this policy and program, because most of the policies and the program which are implemented in Northeast state becomes a failure because it doesn't fit in to the situation of the Northeastern state. तो उसको किस तरीके से जो वन साइज फिट्स ऑल जो पॉलिसी है, उसको किस तरीके से सेंटर में हमारे तरफ से एक सुझाव दे के उसको कैसे करके रीजन स्पेसिफिक पॉलिसी बनाया जाए, ताकि सरकार की तरफ से हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स अस लॉट ऑफ मनी, बट ड्यू टू द फॉल्टी पॉलिसी द मनी इज़ वेस्टेड एंड इट डजंट यील्ड द डिज़ायर्ड रिजल्ट फॉर द रीजन. तो हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार से काफ़ी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के डेवलपमेंट के लिए फंड्स आते हैं, लेकिन ड्यू टू द फॉल्टी पॉलिसीज़ तो ये जो हमारे यहाँ पे ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में हमें बहुत चैलेंजेस होता है. जस्ट फॉर एन स्मॉल एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू create infrastructure in remote places where there's no road, so one bag of cement costs you around 5,000 to 6,000 in some places, because you have to carry the load of the cement and the steel on a head load. Whereas if the same infrastructure has to be created in the mainland somewhere, if that cost is 1 lakh, that will cost you around 15 lakhs in the hills. So this needs to be understood properly by the people who are framing the policy at the central level, जिससे हमारे यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों को पूरा बेनिफिट मिल सके केंद्र से जितना भी धनराशि आता है. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिन वेरी काइंड इन गिविंग फंड्स फॉर ऑल काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स. तो उसको लेके हमारे तरफ से यही है कि कोशिश रहा है कि हमारे जितने भी CPA कॉन्फ्रेंसेस में टू फ्लैग द प्रॉब्लम्स विच इज़ बीइंग फेस्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. तो आज की भी जो टॉपिक है उसको भी हमने यहाँ पे बहुत ही विस्तार में चर्चा किया है. हम यहाँ पे विस्तार में चर्चा करके उसका डॉक्यूमेंटेशन भी हमने किया है. और मैं माननीय राज्यपाल से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी जब भी दिल्ली जाएं और दिल्ली में हमारे जितने भी केंद्र सरकार में जो मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से या गृह मंत्री जी से मिले, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के, आप तो यहाँ मेघालय पे है तो आपको भी भली बात ही पता है यहाँ का क्या प्रॉब्लम्स है और हमारे पूर्वोत्तर राज्यों का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सारा राज्य का भौगोलिक जो एक स्थिति है इट्स ऑलमोस्ट द सेम एंड वी फेस सेम काइंड ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर. तो ये आप भी जाके वहाँ पे हमारे यहाँ पे लोगों का जो कंसर्न है आप भी केंद्र में जाके आप पहुँचाएँ, ताकि हमारे लोगों को पूरा बेनिफिट मिल सके जो हमारा केंद्र सरकार से हमें जो धनराशि के रूप में हमारे यहाँ जितने भी प्रोग्राम एंड पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के लिए स्कीम्स जो हमारे यहाँ पे आता है. तो मेरे तरफ से समय ज़्यादा न लेते हुए मैं फिर से हमारे मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री श्री कांग्रेस संगमा जी को और हमारे राज्य विधानसभा के अध्यक्ष श्री थॉमस ए संगमा को, हमारे जितने भी डेलीगेट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से यहाँ पे आए हैं, हमारे जितना पीठासीन अधिकारी और उनके सहयोगी जितना आए, उनके तरफ से यहाँ पे जो आपने हमारे लिए जो प्रबंध किया है रहने के लिए, for the comfortable stay and the warm reception you have given us and organizing this conference here in Shillong, we would like to thank you from the core of our heart, and we would cherish this moment of your hospitality and the beautiful arrangement of this conference for times to come. And lastly, I would like to thank Honorable Governor for accepting to be the chief guest for the valedictory function for today's 20th CPA Conference of India Region Zone 3. With these few words, I would once again like to thank each and everyone for participating very positively and meaningfully in this conference. Jai Hind.